Hi friends, welcome to Travel Wellness Adventures. If you have ever traveled along the Mumbai-Pune highway, you might have noticed a mountain in Khandala Ghat, resembling a snake foot. This is Nagfani Hills, also known as Duke's Nose. This will be our today's trek destination. It's a easy great trek, which attracts not only the new trekkers but also the adventure enthusiasts who enjoy activities like rappelling, rock climbing, camping, and valley crossing. The trek starts with a pleasant drive through the rural countryside to the base village of Kuravande, which is around 8 kilometers from Lonavala. This trek was organized by Trekaholics, a venture founded by two young adventurers, Viral and Vaibhav. This particular day and trek were special for them, making the completion of 2 exciting years of Trekaholics journey. Upon arrival, we were provided breakfast by the organizers. Since morning, it had been raining, transforming the weather into pleasantly cool and refreshing experience. A thick layer of fog enveloped the surrounding, adding the beauty to the landscape. The mist and the rain combined to enhance the natural beauty of the area, providing a serene and magical atmosphere, ideal for an adventure hike. The Duke's Nose trek is short and engaging, beginning with a gentle walk along the rugged countryside that gradually ascends. This is my friend Chiranjit Lal Vyas. This is the starting point of Duke's Nose. Myself Vats Raja, I am currently sales associate at Veena World and I am volunteering with Trekaholics since past 4 months. Khushi, digital marketer. Hi, Aradhana Yadav. By profession, I'm self-employed in real estate. Wow, see the road ahead. You can't see. कर रहे ड्यूक्स नोज, इसको हम लोग मराठी में बोलते हैं नागफनी. नागफनी मतलब नाग का फनी, कोबराज हुड. लेकिन ड्यूक्स नोज के पीछे एक कहानी है छोटी सी. जब हमारे देश पर ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे तो वो लोग जब मुंबई से पूना कैप्चर करने के लिए 1805 में जब खंडाला घाट को क्लाइम कर रहे थे तो उनका वो टाइम पे कमांडर था आर्थर वेलेस्ली, जिसको बोला जाता था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन. तो जो नागफनी की जो शेप थी उसकी और ड्यूक्स के नोज में उनको सिमिलरिटीज नजर आई, तो वो चिल्लाने लगे ड्यूक्स नोज. और ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किस्सा है, तब जाके इस पॉइंट का नाम पड़ा ड्यूक्स ऑफ नोज, मतलब ड्यूक्स. और वही बंदा आगे चलकर इंग्लैंड का पीएम भी बन गया. On the way of trek towards the Duke's Nose, we'll come across the place which is the originating point of Indrayani River. Fed by rain, this river flow east from there to meet Bhima River, also known as Chandrabhaga River. The river has a great religious importance, and the two sacred towns of Alandi and Dehu are situated on its bank. Dehu is known to be a sacred place for being the hometown of poet Sant Tukaram, and Alandi holds the samadhi of poet Jnaneshwar. हम लोग पहाड़ के ये बाजू में आती, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती है ये नदी. अगर वो थोड़ी एक 50-60 मीटर उधर रहती तो वो अरेबियन सी में जाती थी. क्यों? क्योंकि उसका फ्लो उस साइड मिल जाता. The final 20 to 30 minutes of the trek are steep and adventurous climb. The experience is almost magical on a cloudy monsoon day as you walk through the mist to reach the summit, where you are rewarded with a panoramic 360-degree view of the entire region.
व्यू देख लो सर, व्हाट अ व्यू। पूरा फॉग से भरा हुआ है बट हियर यू कैन सी द माउंटेन। दिख रही है। हजारों सपने सुहाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ किसी। और यहाँ पे देख रहे हैं We are on the clouds. So friends, finally we have reached the top point of Duke's Nose. Here you can see the sacred Lord Shiva temple. Since it's raining, the entire place is covered with clouds. Otherwise, in a normal day, you can spot over half a dozen of forts, including Lohagad, Visapur, Rajmachi, Korigad, Tikona, and others. 1, 2, 3, go! गणपती बाप्पा मोरया! मूर्ती मोरया! हर हर महादेव! छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! भवानी जय शिवाजी! भारत माता की जय! वंदे मातरम! How's the Josh? Hi sir! How's the Josh? Hi sir! जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन लिख जाएगा माटी के मोल। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों पर देकर अपने की कोई निशानी छोड़। अब हम ड्यूस नोस का ट्रैक कंप्लीट करते हुए बेस कैंप की ओर पहुंच रहे हैं। पूरे रास्ते में घना कोहरा है।